तो दैट राउंड इज कम्प्लीटली अबाउट कि वो आपको सिचुएशन पे सिचुएशंस दे रहे हैं, सो दैट बेंच Okay. एक्सपीरियंस वाज समथिंग इट स्टार्ट्स ईटिंग यू आफ्टर यू हैव बीन वर्किंग फॉर 12 आवर्स 15 आवर्स। मेरा मन स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज के लिए ज्यादा था। आई विल से जरूरी नहीं है आपको डीएसए के लिए बहुत टाइम चाहिए, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। एक होती है ना, जिद होती है। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करने वाले हैं। इनका नाम है रुचिका। इन्होंने अभी 2022 के अंदर ही अपना एमसीए कंप्लीट किया है और रिसेंटली अमेजन को भी ज्वाइन किया है। तो क्या है इनकी पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। हाय रुचिका, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ रुचिका, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो रुचिका, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए, काइंड ऑफ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए So अपने I've बारे में। completed my BCA from Rajasthan University, and then I completed my MCA from NIT Raipur. With that, I started my journey of working within a startup. Then I moved to Deloitte, and then I moved to Amazon. So it's been only a week of me working in Amazon, but it's a really very big experience. Like I can say, I have done startup, then a consulting firm, and now I've come to a product-based company. राइट, तो रुचिका, हम बिल्कुल स्टार्ट से बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप अपने बीसीए और एमसीए के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मतलब वो जर्नी कैसा थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? So, like I'll say from 11, 12th only, I've been interested in computer. I've been interested in coding. So I had computer as an optional subject in my 11th, 12th. And because of that, I started doing CA, but wasn't interested in that. So I moved to BCA. And BCA, I was completely focused on Java language. I wasn't a DSA based student. I never touched DSA in my BCA level. सिर्फ प्रोजेक्ट्स किए, सिर्फ जावा के ऊपर प्रोजेक्ट्स किए, एंड्रॉइड सीखा। तो आई विल से बीसीए में आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ओनली। आई बिल्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद फॉर एमसीए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग निमसेट। इट इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल द एनआईटी कॉलेजेस। So I prepared for that. I cracked it luckily. Without maths, that was a tough thing. So then after coming to MC, I'll say second semester के बाद से I switched to Python. Then I'm last 3 years I've been working on Python only now. तो completely Python switch किया. It was a big switch, but it was really very interesting. Because Python comparatively easy पड़ता है। जिसने जावा सी प्लस प्लस कर रखा है उसके लिए पाइथन बहुत इजी पड़ता है। देन आई थिंक आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल्सो। सो उससे भी मुझे काफी हेल्प हुई खुद को अंडरस्टैंड करने में लैंग्वेजेस को। जब पढ़ाते हो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है। एंड आई से डीएसए मैंने फोर्थ सेमेस्टर में आके उठाया एमसीए के, कि नाउ फ्रॉम फिफ्थ सेमेस्टर कंपनीज आर गोना कम, लेट्स बी सीरियस अबाउट गेटिंग अ प्लेसमेंट ऑल्सो। Right. But I was very serious in those months. And because of COVID, we were just at home. We had nothing else to do. So at that time, it was like 300 questions in a month, 10 questions a day. ये streak चल रहा था. So वो 3-4 months जो थे वो मेरा डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग कर गए। आई से जरूरी नहीं है आपको डीएसए के लिए बहुत टाइम चाहिए, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। और एक होती है ना, जिद होती है कि मुझे क्वेश्चन करना ही करना है। जब तक नहीं होगा तब तक दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन नहीं होगा। हाँ, तो मैंने अभी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, तो आपने एमसीए तो अभी कंप्लीट किया 2022 के राइट अंदर ही। तो आपने कभी ये सोचा था ड्यूरिंग बीसीए या फिर एमसीए कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तरफ जाना है या नहीं जाना है? एक्चुअली नहीं, मेरा मन स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज के लिए ज्यादा था। बिकॉज आई एक्सप्लेन व्हाई आई डिड इंटर्नशिप फ्रॉम अ स्टार्टअप। दे विल गिव यू टू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन, और वहां पे ग्रोथ का एक ऑप्शन ज्यादा रहता है। बिकॉज दे आर ऑल्सो, वो एक बहुत अर्ली स्टेज पे है, उन्हें भी ग्रो करना है। तो फिर एज एन इंटर्न आप कोई नहीं सोचते कि आप इंटर्न भी हो या आप अभी प्रेशर ही ज्वाइन हुए हो। एंड देयर इज नॉट अ सेट ऑफ ट्रेनिंग दैट यू गो थ्रू, इट्स लाइक यू डू इट एंड यू लर्न बाय डूइंग इट। तो मेरा मन कहीं ना कहीं स्टार्टअप पे ज्यादा था। बट आई से आई कुड नॉट गेट अ स्टार्टअप विद अ पे दैट आई वाज लुकिंग फॉर। सो आई देन एंड Amazon तो फिर कहीं ना कहीं एक ये हो जाता है कि इट्स अ कंपनी दैट यू वांट टू गो। एवरीबडी वांट्स टू गो। तो फिर एंड आई से फैंक के Amazon के लिए थोड़ा एक अलग मोटिवेशन था मेरे पास, बिकॉज आई हैव बीन अप्लाइंग इन इट
एंड आई वाज गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स, आई वाज गेटिंग द इंटरव्यूज, बट मेरे इंटरव्यू रीशेड्यूल हो रहे थे. सो आई ओके. वेंट थ्रू दैट स्टेज ऑल्सो. सो दैट्स आई वाज लाइक आई वांट टू क्रैक दिस कंपनी नाउ. अच्छी बात है. एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये था कि अब आजकल क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स थोड़े बहुत डिप्रेस बोल दो या फिर ये चीज़ें इंटरनेट पे ज़्यादा चलती है ना कि आपको फैंग में जाना है, फैंग में जाना है, फैंग में जाना है. तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपका कोई ऐसा खास इंटरेस्ट था नहीं, बट लकीली आपका अमेजन में हो गया, राइट, आगे जाके. उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट स्टार्टअप्स वगैरह में था, तो जस्ट आफ्टर एमसीए वो एक्सपीरियंस किस तरह का था, किन किन कंपनीज में आपने काम किया बिफोर अमेजन? For Amazon, there is a startup called Acridata, AI-based startup completely, and this was the job that I got through LinkedIn. So HR posted about it, and he was looking for a Python student. और तब तक Python पे I was working a lot, so I was like, why not to do an and in MCA in our college, 6 semester is a compulsory internship. बिना उसके आपको राइट. डिग्री मिलेगा भी नहीं. सो एनी हाउ वी हैव टू डू इंटर्नशिप. सो आई मैसेज दैट गाय, वी सेट अ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, एंड आई क्रैक्ड इट. एंड एक्चुअली वो वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग दैट वाज अमेजिंग इन दैट कंपनी. I really, really want to work with them again in future if I get a chance. That was a really good experience. I get to work on a different projects. To be honest, उससे पहले तक about those like डॉकर और क्यूबरनेट्स पे बेसिकली ज्यादा वर्क था. एंड एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपने इनके बारे में ज्यादा सुना भी नहीं होता है, क्योंकि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन ये हमें कॉलेज लेवल पे जरूरत ही नहीं पड़ती है. राइट. ये हम बाद में ही सीखते हैं. तो इट वाज समथिंग कि मुझे बहुत अच्छे को सीखने मिला. आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. थोड़ा प्रेशर भी था, स्टार्टअप था तो थोड़ा प्रेशर भी था मुझ पर. होता है. थोड़ा कई बार इट वाज लाइक वर्क टाइमिंग भी थोड़े ज्यादा हो जाते थे. इट्स सेट टाइमिंग 8 to 9 hours ही थे, बट समटाइम्स यू आर वर्किंग 12 hours ऑल्सो. अच्छा, जब आपने फिर स्टार्टअप ज्वाइन किया, इसके बाद की कोई और कंपनी ज्वाइन की या फिर डायरेक्ट अमेजन? नहीं, इसके बाद कैंपस प्लेसमेंट पे आई गॉट डिलॉइट. सो डिलॉइट वाज द फर्स्ट कंपनी दैट आई सैट फॉर, एंड लकीली आई गॉट दैट इन. So for then I moved to Deloitte from internship after internship. So in Deloitte, I'll say I was there for 3 months. That was something. That experience was I'll say for me Deloitte was not the company that I wanted to ever go again and work part. It's like a personal choice. I know I'm gonna get a lot of things for this statement because a lot of people want to get into Deloitte, but I'll say it's more of a CA company than a software company. So for the 3 months, I was continuously on bench. So that bench Okay. experience was something. It starts eating you after you have been working for 12 hours, 15 hours. Sometimes you are working straight for 2 3 days where you have to complete the deadline, and then you are just sitting doing nothing for 2 3 months. So that thing was kind of my low point for me. I used Right. to like my motivation was gone. I stopped coding at that time. So that was my lowest point. I'll say not getting interview calls wasn't the lowest point for me. Sitting on bench and doing nothing was my lowest point. अच्छा, तो फिर अब हम अमेजन के बारे में बात करते हैं. तो अमेजन वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसे क्रैक हुई, मतलब वो मिली कैसे वो अपॉर्चुनिटी? So for this one, I got a recruiter call only. So I'll tell this to everybody. Upload your resume on every recruiting site that you can find. You will never know from where you will get a call. So I got a call because of a Insta share करके एक website है. I don't even remember क्या है. The recruiter contacted me. So he's like, "Are you interested?" I'm like, "Yes, I'm interested." So it was an offline event that was happening. So one day all the rounds will be scheduled for you. Online test से लेके face to face interviews one day. So I went, I was like, okay, I don't have an issue. तो सैटरडे ये इवेंट शेड्यूल हुआ. ये इवेंट आगे भी चलते रहेंगे. So make sure you are like uploading your resume on all the sites because the recruiter is gonna contact you from there only. और उसमें फोन नंबर मेक श्योर इज द योर करंट फोन नंबर ओनली. राइट. ईमेल पे कम आते हैं इसके. दे कॉन्टैक्ट यू फर्स्ट आफ्टर यू आर लाइक यस आई एम रेडी फॉर इट, देन दिल सेंड यू एन ईमेल और इनवाइट. अब तक आप जितने भी अगर एसडी के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो उसमें एसक्यूएल क्वेश्चंस नहीं होते बिकॉज दैट इज फॉर एसडी. एप्लीकेशन इंजीनियर का पोस्ट जो था उसमें आपके इसके एसक्यूएल क्वेश्चंस भी थे. 2 डीएसए क्वेश्चंस के साथ 2 एसक्यूएल क्वेश्चंस, फिर एप्टी क्वेश्चंस एंड सम दिस
आउटपुट टाइप क्वेश्चंस, सी प्लस ओके। प्लस और टेक्निकल क्वेश्चंस सब। तो हम्म। कंपैरेटिवली एक वही जो चलता आ रहा है एसडी ऑनलाइन टेस्ट का फॉर्मेट वही था, खाली एसक्यूएल हम्म। क्वेश्चंस नए थे, बट माय एसक्यूएल इज रियली वेरी गुड. I was able to crack it. So after that, ओके। the first online test is always about DSA only. They'll ask you some राइट। basic DSA questions. Face to face में वो थोड़ा easy पड़ जाता है because you can explain, you can ask them directly. I'll say face to face rounds are comparatively easy than online rounds. Then he asked me some array questions. Uh, normal when missing number in an array, how will you find out? So he was just हम्म। looking for all the options. He was not looking for only the optimized solution. He was looking for how will you gradually move from an unoptimized solution to an optimized one. So make करेक्ट। sure you don't directly give the optimized solution only. Just start with a brute force and keep on increasing that. Because राइट। then he'll see that okay, now you know the time complexities also, you're reducing them. Well, after every solution, time complexity and space complexity he'll ask. और फिर वो ग्रेजुअली जब आप डिक्रीज कर रहे हो तो वो दिखता है कि हाँ आपने पढ़ रखा, आपको आता है. सो आफ्टर लाइक 30 minutes दे विल कॉल फॉर द सेकेंड राउंड. So the second round was based on OS, networking, हम्म। and a little bit about some situation based question about how will you handle them. कि आपके हम्म। पास you have to have a system that need this much. What kind of ओके। like networking options you will look for, और आपको ऐसे like कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करोगे इफ यू वांट टू सेंड ओके। थिंग्स ओवर द इंटरनेट लाइक दैट. तो वो टाइप के हम्म। क्वेश्चंस थे वो बेसिकली. आई वाज ओके। प्रिपेयर्ड फॉर ओएस एंड डीबीएमएस नेटवर्किंग के लिए. सो आई से मैंने उनको डायरेक्टली बोला था कि कहीं ना कहीं आप जो टॉपिक्स पूछ रहे हैं आई एम नॉट हम्म। वेल वर्स्ड विद देम. आई नो लिटिल बिट अबाउट देम बट वेल वर्स्ड नहीं हूं मैं कहीं ना कहीं इतना. सो हम्म। बट इफ गिवन अ चांस आई विल मेक श्योर मैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ वापस. तो करेक्ट। जब आप इस तरह बात करते हो तो कहीं ना कहीं दिख जाता है ओके व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट्स योर वीकनेस. जो चीज नहीं आती है हम्म। ना उसको इस तरह समझाओ कि उसको भी लगे कि ओके एट दिस पॉइंट इसको ये चीज नहीं आती बट शी नोज दिस थिंग. राइट। थर्ड राउंड सबसे टफेस्ट राउंड था. उस राउंड के बाद मुझे लगा कि मेरा बार रेजर तक नहीं जाएगा. बिकॉज ओके। थर्ड राउंड था कंप्लीट सिचुएशन राउंड. ही अच्छा। गेव मी सिचुएशंस कि आप मैनेजर हो, सडनली हम्म। आपने कोई इश्यू आ गया है, आपने कुछ नया ओके। प्रोडक्ट डिप्लॉय किया, इश्यू आ गया, आप कैसे हैंडल करोगे. फिर उसमें आप ऑप्शन दिए जा रहे हो, ही इज लाइक नो नो दिस सोल्यूशन वोंट वर्क. फिर आप कुछ दे रहे हो, दिस वोंट वर्क. तो दैट राउंड वाज कंप्लीटली अबाउट कि वो आपको सिचुएशन पे सिचुएशंस दे रहे हैं और हाँ। आपको एक पॉइंट पर रियलाइज नहीं होता कि ओके एज अ फ्रेशर यू आर आल्सो लाइक ओके आई नेवर डील विद दोस, आई डोंट नो व्हाट हाँ। विल आई डू एट दैट टाइम. But हम्म। I think that's what they are looking for. As a fresher, how will you handle? Because you have to be on call after 6 months. बेसिकली सिचुएशन क्वेश्चंस का कोई करेक्ट आंसर तो होता भी नहीं है, वो बस आपकी एबिलिटी देखना चाहते हैं कि आप कितना सोच सकते हो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आने पे, राइट. बट हाँ कहीं ना कहीं उस राउंड के बाद आई फील लाइक मेरा अब बिकॉज दैट वाज द लास्ट राउंड. उसके बाद दे हाँ। सेड इट वाज ऑन सैटरडे, सो दे सेड इफ यू क्लियर्ड इट ऑन मंडे यू विल गेट अ कॉल. ओके। सो it was okay. So those one day of Sunday that was kind of like okay हुआ है नहीं हुआ है. तो फिर मंडे को कॉल आ गया था आपके पास या फिर थोड़ा और डिले हुआ? नहीं, Monday recruiter called me that आपका no Monday didn't call, Tuesday didn't call, so Wednesday I decided to call the recruiter to ask ओके। कि what's the situation. So he's like, oh राइट। you have cleared it, you haven't got the, she was shocked, she was like you haven't got the mail or what, your interview scheduled for राइट। Friday. I'm like okay no I don't have that information. So my bar हाँ। result was scheduled for Friday, but due to some event it got rescheduled again. So then it was got rescheduled for another Friday. But by the time my interview was calling, recruiter was calling me like, okay, this bar is a girl or the person they haven't, selected any candidate till now. Be ओके। prepared. But राइट। my bar raiser was really the best round till now was a bar raiser. Because when I explained about myself, and the thing was, she got interested about that I've been teaching from a long time. I've been teaching for 2 years. So she got interested in that part. So ओके। she asked me questions about that only. So it was like 10-15 minute discussion on my teaching career only, about how I teach, how I find students, how I make them understand things. She gave me even a topic to explain at that time. तो जो प्रिंसिपल्स को लेके एक अलग सिनेरियो पार्ट होता है बार रेजर में,
उसने वो सारे प्रिंसिपल्स मेरे टीचिंग करियर में ही अप्लाई करवाने शुरू कर दिए मुझसे। एंड आई कुड फील Okay. दैट शी इज आस्किंग मी ऑल दिस क्वेश्चन इन द टीचिंग करियर ओनली। ओके, तुमने ये प्रिंसिपल कहाँ लगाया, लाइक कस्टमर ऑब्सेशन। सो दैट शी वाज लाइक, आर यू आर इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स और यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन कि मुझे कोर्स ही खत्म करना है। तो शी आस्क्ड मी अबाउट दैट। देन बार रेजर में भी दो डीएसए क्वेश्चंस थे, वो रहते हैं बार रेजर में भी। नॉर्मल ओएस क्वेश्चंस भी रहते हैं। वो आपके बार रेजर पे डिपेंड है कि उसको व्हाट शी इज गुड एट, तो वो उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछती है। बार रेजर टिपिकली ऑल द थिंग्स दैट आई हैव गॉन थ्रू दे विल कंबाइन दैट इन वन इंटरव्यू। सो बार रेजर के बाद दे सेड दैट दे टेक अ वीक in telling you that you have cleared or not. But my recruiter called me in the evening only. So my bar is around 10 to 11. So I got a call from recruiter around 5 in the evening only that you have cleared it. But the official call from the whoever is my HR, I got that on Monday. So my offer letter was released on Monday, but I got a recruiter call on Friday only that you have cleared it. अच्छा रुचिका, अब लास्ट के दो क्वेश्चंस और हैं। एक क्वेश्चन तो ये कि ड्यूरिंग दिस कंप्लीट पीरियड फॉर ऑफ बीसीए, एमसीए और जॉब एक्सपीरियंस, आपने कौन से ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज या टूल्स यूज़ किए जो कि एक फ्रेशर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? So this question I've been asked a lot after posting that I've got Amazon. So first thing is, I'm not a video student. So people study from videos. मुझसे नहीं, I need books or I need content that's written. So मैंने websites follow की, GFG सबसे ज्यादा follow किया, Geeks for Geeks and Lead Code. These are the two websites that I'm mostly very active on. GFG और लीड कोड प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और GFG आपका मतलब बाकी चीजों के लिए भी है, उस पर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है इजीली। तो वट एवर कोड दैट यू आर लुकिंग फॉर या आप जो भी देख रहे हो उस पर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। एंड मैंने क्लासेस काफी अच्छे से ली थी डीएसए की मेरे कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत हेल्पफुल था। टीचर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। मेरे क्लास वाले एग्री नहीं करेंगे इस चीज से। उसके अलावा आई यूज्ड हैकर रैंक ऑल्सो। स्टार्टिंग मैंने हैकर रैंक से किया और W3 स्कूल से किया टू लर्न द बेसिक एंड देन कंटिन्यू। सो W3 स्कूल इज ऑल्सो अ गुड प्लेस वेयर यू कैन लर्न द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद देन आई मूव फॉरवर्ड टू GFG। और कहीं ना कहीं इफ आई फेल्ट लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी पॉइंट, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स की हेल्प ली। So they all are very good at DSA and everything. So I took their help in understanding कि मुझे टॉपिक समझा दो, and once I understood that topic, I moved forward to that question. And मैंने I didn't follow any particular sheet. What I did was I choose a topic, फिर मैंने उसके questions ढूंढे। तो जितने इजी क्वेश्चंस थे सबसे पहले वो किए, फिर मीडियम पे आई, फिर हार्ड पे आई। मैंने खुद को टाइम दिया, डिडंट पुश माई सेल्फ कि ओके ये करना है ये करना है। नहीं, जो टॉपिक अब तक समझ में आ रहे वही किए। मैट्रिसेस मुझसे अभी भी नहीं बनते इजीली। तो आप अगर GFG या लीड कोड पे जाएंगे, आप Amazon डालेंगे या कोई भी कंपनी डालेंगे, तो उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सो जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चन। एंड GFG पे एक इंटरव्यू शीट करके है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू शीट करके है, that is like a online course, but that we got that course from our college. So I followed that also, तो उसके थ्रू हो गया। So mostly I'll say कि rather than watching much more videos, I was more hands-on experience. Okay, so Ruchika, last question is like, what suggestion you want to share with the freshers? Don't completely focus on DSA also. They'll look for projects. They'll look for your experience also. चाहे वो प्रोजेक्ट आप कंपनी के थ्रू कर रहे हो चाहे खुद का कर रहे हो, दे वुड वांट टू नो दैट यू हैव डन प्रोजेक्ट्स आल्सो। ट्राई टू एंड डोंट, इफ यू आर स्टिकिंग टू जावा ओनली, डोंट स्टिक टू ओनली द कोर बेसिक। ट्राई टू गो फॉर वेब डेवलपमेंट आल्सो, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर पाइथन आल्सो विथ ML एंड AI। पाइथन में हम लोग का सबसे पहला थॉट ये जाता है ML और AI का कोई ना कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। नहीं, GUI साइड भी बहुत अच्छा है पाइथन का, गो फॉर दोज आल्सो। Make sure your projects stand out. Don't try to copy paste. And if you are trying to copy paste, learn, understand what you are copy pasting. हमने कॉलेज में देने थे हम लोग को प्रोजेक्ट्स, हमने कॉपी पेस्ट करके दिए हैं, बट व्हाट वी मेड श्योर इज कि उसके बाद रिज्यूम में जो हम प्रोजेक्ट डाल रहे हैं वो हमें आते हो। बहुत गंदा होता है जब आपसे रिज्यूम का प्रोजेक्ट पूछ ले एंड यू आर स्टक। वो बहुत गंदी सिचुएशन होती है। Okay, so yeah, right. So thank you very much, Ruchika, for giving us your time. I think
काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्रेशर्स को ये वीडियो देखने के बाद। Thank you for inviting me, and thank you for listening to me for this much time. And Baki, if you need anything, you can ping me. For referrals also, Amazon for referral, I'll say one thing. Amazon is going to conduct these offline events. So if you are in Bangalore, Hyderabad, those places, it's an offline event only. So we can only refer you if you are physically available on that day. So I'll keep on posting on my LinkedIn that they are offline event is on that day. If you are interested, please ping me. I'll be happy to refer to you. Okay, I will add your profile link in the description. Okay, Ruchika, thank you very much.